Okay, Assalamu alaikum, ladies and gentlemen. आज हम चैप्टर 12 पढ़ने वाले हैं which is based upon working drawings. Okay, and हमारे पास टॉपिक्स इसमें जो हम लोग कवर करने वाले हैं we will take an overview of this whole session. Okay, because there's a ton of things that I think if you read it yourself, it will be more beneficial rather than me, going through each and every slide. So I'm just going to give you the specific details of stuff that you will need to understand. All right. So let me first look at it. Okay, so it's working fine with me. I don't know what's the issue there. So I think you guys should wait for it a bit. ये थोड़ी बेहतर हो जाएगी. अच्छा, now ये buffering सिर्फ starting में कुछ कर रहा है. I don't know what's the issue with YouTube anymore. So maybe it's with YouTube or something because सिराज और मेरा different PC है लेकिन again जो है वो क्या कहते हैं ये कोई एक इशू जो है वो आई थिंक ऑनलाइन आ रहा है समथिंग
So I think let's move on then. Now that it's working. हाँ, because मैं कुछ कह नहीं रहा था, so that's why आवाज़ कैसे आएगी मेरी. Okay. So chapter number 12 is our working drawing और हमारे पास यहाँ पे कुछ टॉपिक्स हैं. सही है. अगेन मैं ज़रा रिपीट कर दूँ अपनी बात के वी विल गो थ्रू सम ऑफ द टॉपिक्स. सही है. ऊपर ऊपर से अगेन you guys have to make sure that you read these slides yourself. Okay, because I cannot really cover all the theoretical aspects, but इसमें जो details हैं वो हम लोग आज cover करेंगे. Okay. So working drawing is what is working drawing? Okay. तो एक प्रोडक्ट है से उसमें बेसिकली आप अगर एक असेंबली ड्राइंग करते हैं. ठीक है. एक आपका कोई भी प्रोडक्ट है उसकी एक असेंबली ड्राइंग होती है. यू गाइस नो व्हाट एन असेंबली ड्राइंग इज और उसकी डिटेल्स. सो दैट इज व्हाट वर्किंग ड्राइंग रेफर्स टू. ठीक है. वर्किंग ड्राइंग इज व्हाट योर प्रोफेशनल ड्राइंग इज. ओके. डिटेल ड्राइंग में आपकी मल्टीव्यू रिप्रेजेंटेशन आ सकती है जिसमें डायमेंशंस आप देते हैं एंड नोट्स देते हैं जिसमें आप कट आउट व्यूज शो करते हैं एंड एवरीथिंग अदर देन दैट. और असेंबली ड्राइंग में आपका ऑब्वियसली जो आप डिफरेंट पार्ट्स को असेंबल करके स्ट्रक्चर्स को एक उनकी पोजीशंस डिफाइन करते हैं कि कौन सी चीज़ कहाँ जाएगी, कौन सा नट कहाँ जाएगा एंड स्टफ लाइक दैट. सो दीज आर द टू मेन एरियाज. नीचे आते हैं. यहाँ पर हमारे पास देखिए सबसे पहले आपको डिटेल ड्राइंग में क्या क्या प्रोवाइड करना पड़ता है. एक जनरल इंफॉर्मेशन के तौर पे आप उसका ऑब्वियसली टाइटल व्हाट यू आर मेकिंग आउट ऑफ इट. ओके. एंड पार्ट की इंफॉर्मेशन जिसमें शेप की डिस्क्रिप्शन. सही है. जो कि आप बेसिकली ऑब्जेक्ट व्यूज से देते हैं. कहाँ पे कर्व्स आ रहे हैं, कहाँ पे सर्कल्स हैं, कहाँ पे होल्स हैं, थ्रू होल्स एंड एवरीथिंग. Okay. And size and specifications are notes. Now again go through these slides to read it yourself. It's not that hard really. Normally जब आप एक प्रोफेशनल ड्राइंग प्रोवाइड करते हैं being in a company or something, okay, like we do, तो आप सबसे पहले ऊपर कंपनी का नेम लिखते हैं. आप लोगों ने ड्राइंग शीट्स देखी होंगी सॉलिड वर्क्स पे जब आप एक्सपोर्ट करने जाते हैं अपनी ड्राइंग्स को 2D में विद द डायमेंशंस एंड एवरीथिंग. तो आप जो है उसमें देखते हैं कि नीचे एक कॉलम बना हुआ है जहाँ पर आप जो है वो डिटेल्स एंटर कर सकते हैं. सही है. तो उन डिटेल्स में आपके पास कंपनी का नेम, टाइटल, ड्राइंग शीट नंबर एंड एवरीथिंग ये सारी डिटेल्स आती हैं. सही है. नथिंग लाइक not rocket science anyway. So okay, now part की information basically orthographic drawings होती हैं. इसे again ये एक ही चीज बार बार repeat होगी obviously. So just go through these slides. Okay. uh, oh yeah, type of material. ये specifications में आप ये देखें. सी साइज एंड डायमेंशंस तो हो गई, टॉलरेंसेस भी हो गई. हम लोग देखते हैं टॉलरेंस क्या होती है कि यार फॉर एग्जांपल आपने एक पार्ट बनाया है 6 सेंटीमीटर्स का. सही है. तो आप उसमें डिफाइन कर लेंगे भाई 6.5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर प्लस माइनस 0.5 सेंटीमीटर जो है वो मेरी टॉलरेंस है. यानी अगर 0.5 सेंटीमीटर ऊपर नीचे हो जाता है तो खैर सही चलेगा. अदरवाइज अगर आपको बिल्कुल स्पेसिफिक डायमेंशन चाहिए एंड यू कैन नॉट अफोर्ड एनी काइंड ऑफ टॉलरेंसेस तो आप उसमें मेंशन कर देते हैं. सही है. प्लस माइनस 0 और नो टॉलरेंस एट ऑल. बट स्पेसिफिकेशंस में आप देखिए क्या करते हैं कि आपको टाइप ऑफ मटेरियल कौन सा यूज़ करना है. फॉर एग्जांपल आप मेटल वर्किंग पे जाना चाह रहे हैं. से जो मेटल वर्क्स की आपने कोई ड्राइंग बना के किसी को प्रोवाइड की है. तो यू टेल देम कि यहाँ पर मेटल यूज़ हो रहा है, कौन सा मेटल यूज़ हो रहा है उसकी. फिर चीज़ें आती हैं कि भाई उसका सरफेस फिनिश कैसा होगा. बिकॉज ऑब्वियसली यू गाइस हैव टू एक्सप्लेन इट. इसीलिए आपको सॉलिड वर्क्स में ये वाले ऑप्शंस भी दिए हुए होते हैं कि आप मटेरियल सेलेक्ट कर लें, कलर सेलेक्ट कर लें
और मटेरियल की फिनिशिंग सेलेक्ट कर लें, ग्लॉस फिनिश है, मेटालिक है, व्हाटएवर। सो ये चीज़ें भी इम्पोर्टेंट होती हैं ऑब्वियसली जब आप एक एक्चुअल जो है प्रोफेशनल कंपनी में किसी में काम कर रहे होते हैं से। सो अस्सलाम वालेकुम। ओके, सो इफ नॉट द केस अप्लाई नाउ, यू गाइस नो दैट। सी, ये आपकी एक प्रोफेशनल ड्राइंग शीट होती है, ठीक है, जिसमें आप ऑर्थोग्राफिक ड्राइंग्स प्रोवाइड करते हैं। समटाइम्स यू आल्सो प्रोवाइड आइसोमेट्रिक ड्राइंग्स इन दिस। Obviously, you guys know when you have worked in your engineering drawing lab, okay? और नीचे ये हमारा टाइटल एरिया होता है जहाँ पर where you guys basically fill out your details. See, this is an example here. अच्छा, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बेसिकली आपने एक दिस इज अ फ्लैंज, ओके, और फ्लैंज के बीच में आपने जो सर्कल्स डाले हुए हैं। सो वी आर लुकिंग एट द टॉप व्यू हियर एंड द साइड व्यू हियर, जहाँ पर हमने सारी इसकी डायमेंशंस जो हैं वो बताई हुई हैं। So we have orthographic views of your part. We have dimensions and tolerances. Can I look at any tolerance here? If are we looking at any tolerances here? Let me see. Mm, well, no, we don't have any tolerances. Yeah, we have one here. So you guys can see it, we are looking at this dimension, these two dimensions जहाँ पर हमारे पास एक 4.7 दिया हुआ है and 4.72 दिया हुआ है। तो this is basically your tolerance कि आप इन दो rates के दरमियान जो है वो इसको देख सकते हैं। And other than that, we have 2.375 and then 2.3757। ये भी दो टॉलरेंसेस हैं जहाँ पर आप इन दोनों के दरमियान जो है वो चीज़ें देख सकते हैं। देन वी हैव टाइटल ब्लॉक एंड वैसे देखिए नाम दिया हुआ है, अपनी कंपनी का नाम आ गया है। स्केल के बेसिकली स्केल होते हैं ना, जैसे पहले भी मैंने डिस्क्राइब किया था कि आप एयरक्राफ्ट के मॉडल्स अगर देखने जाते हैं तो it's like 1:47 scale and stuff like that. So you guys tell them कि भाई आप जिस भी चीज़ को देख रहे हैं वो एक्चुअली में इसकी मतलब जो डायमेंशंस दिए हैं वो तो आपकी स्केल डाउन नहीं हुई हुई, बट जो लुक है उसका वो स्केल डाउन हुआ हुआ है। सो बेसिकली व्हेन दे एक्चुअली मेक इट, इट्स गोना बी डबल द साइज ऑफ दिस, ओके, with the given dimensions. So these are that, okay, unless otherwise specified। so ये आपके यहाँ पर if you guys can see, ये हमारे पास जो है वो स्पेशल नोट्स होती हैं, रिक्वायरमेंट्स होती हैं जिन्हें हम बेसिकली देख रहे हैं यहाँ पर। so we basically make that so you know it will be easy for the other person के ये देखें unless otherwise specified tolerances plus minus 0.2। मतलब अगर हमने बकायदा आपको जो है वो कोई डिटेल नहीं दी हुई, so you can we can tolerate 0.2 up and down, you know। so assembly drawing पे आते हैं। assembly drawing यहाँ पर hopefully you guys have understood this, it's not that hard really। now assembly drawing, assembly drawing में we have exploded assembly drawing। exploded views are basically जब आप एक पूरी जो है वो सेटअप रेडी करके उसे बनाते हैं, उसे बेसिकली पूरा एक पार्ट बन जाता है। सो आफ्टर दैट यू बेसिकली शो कि आप इसको अगर एक्सप्लोर करेंगे, सही है, तो किस तरह दिस विल लुक, ओके, यानी कौन सा पार्ट कहाँ जाएगा, द पोजीशन, एवरीथिंग। so you have to explain that as well, okay। राइट, ये देख रहे हैं यहाँ पर एक हमने टेबल बनाई थी,
Say this is the table. We have a tabletop, we have joiner, top strut and stuff like that. So इसका exploded view हमने यहाँ पे show करा है कि this will go here, these screws will go there, and so this is an example for you guys. ओके यहाँ पे पेपर रेस्ट है तो पेपर रेस्ट को यहाँ पर हमने शो करा हुआ है एक्सप्लोड करके। अच्छा इनके क्या कहते हैं जो मोशंस हैं कि ये कहाँ पर जाएंगे, वो लाइंस ऑफ मोशंस भी बनाए जाते हैं। ओके यहाँ पे आई होप वी हैव एन एग्जांपल फॉर दैट। Again, we have an example for an exploded view of a valve. This is a valve. Is this a valve? I guess. No, friction plate of clutch. Yeah, something like that. So clutch plates basically हमने जो है उसकी भी एक exploded view आपको यहाँ पे show कराई हुई है। Then we are going through this assembly of I think it's a gearbox or whatever it is. तो इसकी भी बेसिकली एक जो है वो असेंबली आप देख सकते हैं कि इसे एक्सप्लोड करके आपको यहाँ पे शो कराया हुआ है। So you guys are already familiar with the exploded views. All obviously now only dimensions related to machine operations are given. Machines operations are given in tabulated form. Nothing to see here. Okay. So just go through these. Say ये कुछ examples हैं. Read them. They're not that hard. Mm-hmm. या ये चीज़ एक इम्पोर्टेंट देख लो कि यहाँ पर ये देख रहे दिस इज अ ड्राइंग शीट फॉर योर what can you say, exploded views या assembly drawing basically। assembly drawing में आपके यहाँ पर देखो assembled parts और reference numbers जो है यहाँ पर आते हैं। पार्ट्स की लिस्ट आप यहाँ पे शो करते हैं कौन कौन से डिफरेंट पार्ट्स हैं। सही है। अच्छा देखो ये एक चीज ध्यान में रखना कि आपके यहाँ पर असेंबलिंग पार्ट्स आते हैं, ठीक है, और यहाँ पर आप सारी पार्ट लिस्ट लिस्ट देते हैं। यहाँ आप जो है वो लेट्स से डायमेंशंस नहीं प्रोवाइड करते। सही है। You just tell them the assemble parts, पार्ट की लिस्ट देते हो, रेफरेंस नंबर डालते हो जैसे हमने यहाँ पर किया हुआ है। दिस इज अ गुड एग्जांपल कि ये असेंबल्ड पार्ट्स हैं एंड रेफरेंस नंबर्स हैं। ओके एंड यहाँ पर ये पार्ट लिस्ट है। अब इन इसके अलावा आप जो है वो फिर बैक एंड पे इन्हें हर एक पार्ट को अलग से डायमेंशंस के साथ डिफाइन करके प्रोवाइड करते हैं। एंड दिस इज जस्ट टू इंश्योर कि आपने यहाँ पर कैसे उसको असेंबल करना है, ठीक है। इफ यू नीड एन असेंबल्ड पार्ट ऑब्वियसली। नाउ अच्छा ये एक बेसिकली एग्जांपल दी हुई है, गो थ्रू इट कि यहाँ पर हमने कौन सी चीज कहाँ पे लगाई हुई है ना सब। सो जस्ट लुक एट इट। नाउ yeah, this is for you guys, general practice। okay। नहीं ये सी यहाँ पर हमारे पास दो पार्ट्स गिवन है, ठीक है। दिस इज अ पार्ट ए एंड दिस इज ए पार्ट बी। ओके पार्ट ए के ये बेसिकली दो व्यूज दिए हुए हैं। तो नाउ टेल मी, ठीक है, आई नीड आंसर्स फ्रॉम यू गाइस कि इन दोनों में से कौन सी असेंबली बेहतर है। सही है। ये पार्ट ए के दो व्यूज हैं, ठीक है, नथिंग मोर देन दैट। तो टेल मी इन दो पार्ट्स को अगर असेंबल करते हैं तो इन दोनों में से कौन से असेंबली जो है वो बेहतर एक्सप्लेन कर रही है, पार्ट्स की असेंबली बेहतर एक्सप्लेन कर रही है। आंसर
गुड, वेरी गुड समीर। जो बी है वो ज़्यादा बेहतर तरीके से उसे एक्सप्लेन कर रही है कि असेंबली कैसे होगी। सो you guys have to really be the judge here again। सही है, तो आपको बी जो है वो ज़्यादा बेहतर जो है ना एक्सप्लेन कर पा रही है। सही है, सो नाउ even as they are absolutely necessary to rest its important which is okay, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर अगेन एक और एग्जांपल है हमारे पास। सही है, और एक एग्जांपल में अगेन उस पार्ट को जो है हमने असेंबल किया है। अब मुझे बताओ कि इसमें हिडन लाइंस जो है वो किसमें सबसे बेहतर है, ए बी या सी? बाय द वे दीज लाइंस, ये जो लाइंस है ना जो वर्टिकल आ रही हैं, ये एक्सप्लेन कर रही हैं कि दिस इज अ राउंड, ओके, एंड नॉट अ फ्लैट सरफेस, क्योंकि यहाँ से हमें फ्लैट नजर आ रहा है। सो जस्ट टू टेल कि ये जो है राउंड है। यस, ए इज द बेस्ट आउट ऑफ दीज थ्री, क्योंकि ए में जो है ये पार्ट यहाँ पर जब असेंबल हो रहा है, ठीक है, तो इस असेंबली में यू कैन नॉट एक्चुअली टेल के यार ये पार्ट यहाँ तक मतलब ये जो वाइडर एरिया है ये ज्यादा जो है उसमें पेनिट्रेटेड है या जो लेसर एरिया है वो। सही है, बिकॉज देयर कुड बी कंफ्यूजन कि वो इतना जो है उसे वाइड बनाकर जो है फिर एंड के कुछ ये वाला जो पार्ट है इसे बाहर निकाल सकता था, बट द एक्चुअल इज कि आपने बेसिकली ये पार्ट जो है वो बेसिकली उसको अंदर जो है पेनिट्रेट किया हुआ है। सो दिस इज अ बेटर वे टू शो टू एक्सप्लेन योर डायग्राम। वेरी गुड। तो इसी तरह हमारे पास और भी एग्जांपल्स हैं। सही है, और जिसमें हमने बेसिकली एक्सप्लेन किया हुआ है कि डायग्राम्स जो है ड्राइंग्स को असेंबल कैसे किया जाए एंड उनकी हिडन लाइंस किस तरह से शो करानी चाहिए। सो बी द जज हियर, और उसको बेसिकली असेस करें, चाहिए योरसेल्फ। So you guys are mashallah able to do that now very easily. So just go through these drawings again and look at it कि आपके पास जो है किस तरह से आप उसे बेहतर शो करवा सकते हैं। ठीक है, अगेन कलर डिफरेंसेस भी आप बताते हैं दो ड्राइंग्स में कि अगर आपकी एक ड्राइंग जो है वो कम्प्लीटली सबमर्ज हो रही है, दूसरी एक पार्ट कम्प्लीटली सबमर्ज हो रहा है दूसरे पार्ट के अंदर, सो यू गाइज कीप दिस कलर डिफरेंसेस। सही है, आई मीन दिस इज करेक्ट बट दिस इज बेटर। सही है, अब लेट्स सपोज ये बीच में जो है वो एरिया वाइट है, देन वी हैव ब्लू एंड देन वी हैव ग्रीन। दिस बेसिकली एक्सप्लेन्स मच बेटर कि यार ये जो वाइट एरिया है दिस इज एन एम्प्टी थ्रू होल, और ये ब्लू एरिया इज अ पार्ट एंड देन इट्स सबमर्ज इन अ ग्रीन पार्ट। ठीक है, सो कलर्स भी बेसिकली यूज होते हैं एंड अगेन या सेक्शन लाइंस भी आप बेसिकली सेक्शन व्यू शो करवा रहे हैं। सी white area shows an empty space, blue area shows with the section lines opposite than the wider area। ठीक है, जो कि is या सो एक हम लोगों ने कुछ स्टेप्स यहाँ पर शो कराए हुए हैं, गो थ्रू दीज एज वेल। स्टेप्स में आपके पास यू हैव अ क्लेविस, you have a arm and pin. So you tell them how much do you require. So there is one requirement, and one required
अगेन तो फिर उसके बाद आप जो है उसकी असेंबली शो करवा रहे हैं कि ये स्टील जो है वो क्लेविस के अंदर जाएगी एंड देन देयर विल बी ए स्क्रू, ठीक है। अच्छा, अब अगेन यहाँ पर यू गाइस टेल मी कि ए बेहतर है या बी बेहतर है? Say we have shown a section view, so tell me if A is better or B. Hmm. Well, again, you have to be the judge here. Say yeah, if you really need these section lines or not, क्योंकि आपने इसको बेसिकली सेंटर से कट आउट किया एंड ये देख रहे हो यहाँ पर ये जो पार्ट है, इफ यू डू नॉट मेक सेक्शन लाइंस हियर, so yeah, if you do not make section lines here, so that would mean कि ये part cut नहीं हुआ हुआ, सही है। एंड इफ ये पार्ट कट नहीं हुआ हुआ, so that means कि ये पार्ट जो है वो आउटसाइड है, ना कि इनसाइड, ठीक है। लाइक हियर ये पार्ट हमने असेंबल किया हुआ है, दिस पार्ट गोज थ्रू हियर एंड हियर एंड हियर अगेन, ये इन दोनों पार्ट्स को मिला रहा है। सो इफ वी हमने बेसिकली इसका कट आउट व्यू शो किया, राइट। सो कट आउट व्यू में यू हैव टू मेक दी सेक्शन लाइंस एज वेल, क्योंकि यू हैव टू टेल देम कि यार ये पार्ट जो है बेसिकली इनसाइड था। सो इसी तरह की हमारे पास एग्जांपल्स हैं, दिस slide is full of them. Please go through these and take a look, ठीक है। Um, well, nothing much to see here. See, ये दूसरे डिफरेंट पार्ट्स हैं, ठीक है। अगेन जस्ट लाइक आई सेड कि ये पूरी स्लाइड जो है वो डिजाइन की गई है दैट यू गाइस गो थ्रू इट योरसेल्फ, बिकॉज दिस इज योर सेकंड लास्ट स्लाइड, ओके। और यू गो थ्रू इट योरसेल्फ, रीड थ्रू इट, क्योंकि ये डिफरेंट पार्ट्स हैं और डिफरेंट पार्ट्स को हमने बेसिकली एक्सप्लेन किया हुआ है कि हाउ डू यू यू नो असेंबल देम। सो डिफरेंट टाइप्स ऑफ असेंबलीज आपको शो कराई हुई हैं एंड उनके स्टेप्स दिए हुए। सो गो थ्रू दीज एंड now we're coming towards surface finishing and tolerances, okay। Surface finishing means the quality of a surface and it relates to the level of roughness of a surface, okay। Surface can be anything obviously। um, के नीचे आते हैं, total amount of dimensions area, okay we know that, okay। just these were two। देखो सरफेस का मैंने बताया था ना कि फिनिशिंग कैसी होनी चाहिए थी। देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सरफेसेस, देयर इज अ ग्लॉसी सरफेस एंड अदर सॉर्ट्स ऑफ स्टफ, ठीक है। सो बेसिकली आप एक्सप्लेन करते हैं कि आपका सरफेस जो है वो फ्रिक्शनलेस होगा। Obviously nothing is frictionless 100%, but you know to the extent that you want it to be frictionless. So there is a frictionless surface and there is a surface which is rough, and you need that for to generate friction or something like that. These are two just uh, what can you say, definitions, yeah, just read them। तो ये बेसिकली ये पूरी स्लाइड जो है ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है,
and it's full of examples and everything. इन्हें एक मरतबा पढ़ लेना. I'm gonna share this. I think I have already shared this on LMS. ठीक है. तो ये स्लाइड्स डाउनलोड करके रीड देम, क्योंकि इसमें इतना कुछ, it's everything self, it's like you have to go through it yourself, to basically read and study what is going on. So we are giving you important steps that you need to see. Okay, so I think if you guys have any questions, so you can ask me. अगर कोई जो है वो confusion हो, if anything, so you just have to tell me. ओके, एक ये चीज मैंने अभी इसको जरा नोटिस किया, ये चीज भी देख लो. ठीक है, देन वी विल एंड आवर सेशन एंड वी विल मीट आफ्टर 10 मिनट्स. अच्छा, स्प्रिंग जब आप किसी चीज में एंटर कर रहे हो, से इफ यू हैव एन स्प्रिंग, ठीक है, ऑब्वियसली स्प्रिंग का जो मेन मकसद होता है, दैट इज टू स्टोर योर पावर और द फोर्स, so you can use it later on and everything, to push something back or to pull something. See, anyway, now spring जब आप किसी चीज में किसी एक क्या कहते हैं सरफेस में या किसी पार्ट में जब आप स्प्रिंग ऐड कर रहे होते हो, ठीक है, तो स्प्रिंग की बेसिकली जो फुल लेंथ होती है ना, वो आपको बतानी होती है. ठीक है, कि एक्चुअल स्प्रिंग की लेंथ कितनी है, यू हैव टू ड्रॉ इट. सही है, नॉट सेइंग कि आप हाथ से ड्रॉ करो. राइट नाउ आई एम आल्सो टॉकिंग अबाउट सॉलिड वर्क्स ड्राइंग्स. ठीक है, तो आप उसकी फुल लेंथ जो है वो स्पेसिफाई करते हो, फुल लेंथ उसकी शो करवाते हो, एंड देन व्हेन यू पुट दैट इनटू अ सरफेस, देन उसकी जो लेंथ होती है वो वहां पर स्पेसिफाई होती है. ठीक है, कि वो कितना बेसिकली आपने उसे प्रेस किया है या पुल किया है, whatever. So that is one of the things that I thought I should explain. So with that, I'll see you in next class. Take a 10 minutes break and then we will return. Okay. So we will end our session here. Allah Hafiz.